yes, yes, yes. एक मिनट में full screen कर देता हूँ इसमें. Full screen. Okay, start करिए. Good evening, sir. My name is Arpita Das from. I'm from Digboy, Assam. I completed my schooling from Digboy itself. Then I completed my BTech degree in chemical engineering from Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Chhattisgarh. I completed my summer industrial training from IOCL Digboy refinery itself. And my BTech final year project was on the topic process simulation and techno-economic analysis of BTX production from sapiem oil. Okay. Apart from academics, I conducted events in TechFest during my college year, and I was also part of student alumni organization. My hobby is listening to music. Thank you. Can you tell me more about your project? Sir, basically, my project was totally based on a software called SPEN Plus, where we can we design we design processes for different industry. Okay, so which process you have designed? Any unit operation which you have modeled in that software? Yes, sir. It was based on BTX production from sapiem oil, where we used different kind of distillation column to separate out the different components of sapiem oil. Okay, so what about distillation column? What is the basic principle in which distillation column works? Difference in boiling point. Basically, it's a relative volatility. And the relative volatility. So what is the relation of relative volatility with pressure? With pressure. Sir, if a component has higher vapor pressure, the relative volatility is more. Relative volatility depends on one component or two components? It depends on two components. So if I say relative volatility of ethanol and water is something, and relative volatility of ethanol and benzene is different, it is okay? Yes, sir. Where it cannot be same? It cannot be same. Their boiling point will be different. The boiling point basically depends upon the vapor pressure. Yes, sir. Okay? And as the vapor pressure varies, the relative volatility is basically the ratio of the vapor pressures. Yes, okay, you must have been calculated the minimum number of trays and the trays required to carry out this, or the packing height for the distillation. No, sir, that was not included. Main operation was based on the reactor, where catalysis reactions were inserted into the data of the SPEN Plus software. Okay, what is catalyst basically? Catalyst is used to increase the speed of the reaction, or it can even no, sir. It is used to increase the speed of the reaction. How it increases the speed of the reaction? By decreasing the activation energy of the reaction. How it decreases the activation energy of a reaction? What it does so that the activation energy is reduced? Okay. Basically, two types of catalyst: homogeneous and heterogeneous. Okay. Yes. Homogeneous forms are intermediate product. Okay. So for forming intermediate product, it reduces the energy required to complete a reaction. And for heterogeneous catalyst, it provides a surface for to carry out the reaction. Okay. That's why it reduces the activation energy. Okay. Any favorite subjects you have? Sir, mass transfer and heat transfer. Mass transfer. Can you tell me about 5 unit operations which you have studied in mass transfers? Absorption, stripping, distillation, then desorption. What is the difference between desorption and stripping? Absorption and stripping. Desorption and stripping. You told desorption is another thing and stripping is another thing. So yes, is there any difference?
So they're kind of similar. They are similar only. Okay? Absorption and stripping, or you can call absorption and desorption. Absorption and desorption. Okay. So you have told me about this. What is the basic principle? What is that constant molar overflow? Yes, sir. What is that? Constant molar. The vapor flow rates of liquids and gases Are are constant in Mercaptan method. in in a distillation column. That is Yes. an assumption of Mercantile Assumption. method. That is an assumption of Mercantile. Okay. Any other subject you told mass transfer and Heat transfer. heat transfer. So tell me the basic difference between a conduction and a convection. What is the basic difference? In conduction, heat transfer occurs through direct contact, Hmm. and in convection, heat transfer occurs due to motion of the fluid. It is also in direct contact also. It is also Yes, a sir. direct contact. Yes, but basically due to the movement of the fluid particles. How the fluid particle moves. The convection can occur in solid material. Convection cannot, no, sir. Why? Okay. Can you tell me the type of pumps? Yes, sir. There are two types of pumps: Okay. positive displacement pump and dynamic pump. So positive displacement pump and dynamic pump. What do you mean by dynamic pump? In dynamic pump, it helps to provide velocity to the fluid, which gets converted into pressure. Okay. How it is converted? How velocity is converted into pressure? In dynamic pump, for example, in centrifugal pump, uh, because of the impeller rotation, Yes. it's already in high RPM, so Yes. it imparts kinetic energy to the fluid. So the pressure of the fluid gets increases. By And employing kinetic energy, how the pressure will increase? Energy is constant. No? yes, sir. Overall energy is constant. Constant. So how this kinetic energy is converted into pressure energy? Sir, also because of the casing of the pump. You should say that because the area of the casing increases. Okay? Yes, sir. That will lead to reduction in the velocity and increase in the pressure energy. Okay. 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 Anything you know about the heat exchangers? What are the Yes, different sir. type of heat exchangers? Yes. Types of heat exchangers. Yes. 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 Shell and tube heat exchanger, double pipe, plate, fin. These Yeah. are indirect type of heat exchangers. First, Mm. I have told you what are the type of exchanges. You should say direct contact or indirect contact. Direct contact. Okay, Now, sir. so you are saying in the indirect contact type. Okay. So what does what will happen if you reduce the tube ID? What will happen to the heat transfer coefficient? Whether it will increase or decrease? If we reduce the tube diameter, then velocity will increase. Then heat transfer Because of coefficient. that, heat transfer coefficient will increase. Okay, heat transfer coefficient will increase. And what other things will increase? So turbulency will also increase. Leading to what? Higher Reynolds number. Higher Reynolds number, and pressure drop will also Pressure increase. drop will also increase. In the reaction engineering, you must have heard about selectivity. Yes, sir. What is selectivity? Selectivity is the ratio of moles of desired product to the ratio of to the moles of the reactant. Moles of desired product to the moles of The reactant. reactant. So if desired selectivity is 1, then what does it signify?
Selectivity. Then most of the desired product is equal to the moles of the reactant. There is no byproduct. Yes, sir. Okay. Okay. What are the different orders of the system? Different Orders. First order system, second order system. First order, second order. So can you tell me any example of first order system? Liquid level tank. How it is controlled? What are the type of controls? What are the type of controls? Type of controls. PI, proportional controller. Integral control. Integral controller and derivative controller. Derivative controller. There are also like PI controller, PID controller. Okay. So where do you select where to apply what? Sir, PID is mostly used in flow systems. In flow system तो PI controller use करते हैं. Yes, sir. PI. Where do you use PID? In flow systems, sir. In flow systems, you are using PI also and PID also. Okay. No works. Sorry, sir. नहीं ठीक है. कुछ पूछना है आपको? Yes, sir. Like majorly, which subjects should I focus? Actually, क्या है? I have asked you little difficult questions only. ठीक है? तो बेसिक सही है आपका. आप सही से बोल रहे हैं. इंट्रोडक्शन भी सही है. बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना है क्योंकि आप कोई भी आंसर दे रहे हैं ना तो उस पर आप डाउटफुल रह रहे हैं. ठीक है? आप आंसर करेक्ट दे रहे हैं. ठीक है? मगर यू आर डाउटफुल अबाउट योर आंसर. ठीक है? तो वो थोड़ा अवॉइड करना है. डाउटफुल नहीं रहना है. ठीक है? क्योंकि आपको मालूम अगर आप सही बोल रहे हैं तो यू शुड से विद द कॉन्फिडेंस. यू शुड से विद कॉन्फिडेंस. इट इज लाइक दैट. ठीक है? ओके सर. तो बाकी अच्छा है. बेसिक अच्छा है आपका. ठीक है? हल्का सा कॉन्फिडेंस. जो भी आप आंसर दें नेक्स्ट टाइम जिसको भी आप मॉक दें तो उसको जब आप कोई कुछ भी पूछे आप उसका आता है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताइए कि सर ऐसा होता है. ओके. ठीक है? बाकी बढ़िया है आपका. इंट्रोडक्शन भी अच्छा है. ठीक है? प्रोजेक्ट में थोड़ा क्या है कि एसपेन वगैरह आप आईओसीएल में जा रहे हैं तो मोस्टली प्रोसेस या प्रोडक्शन में रखते हैं तो एसपेन वगैरह का इतना यूज नहीं हो रहा है. ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे अगर आप एसपेन बोल रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम बोल रहे हैं तो ये दे विल डाइवर्ट यू टुवर्ड्स द कोर साइड कि आप डिस्टिलेशन कॉलम बोल रहे हैं ना तो यू शुड प्रिपेयर लाइक फॉर द डिस्टिलेशन कॉलम. ठीक है? अच्छे से. ओके सर. बाकी ठीक है. ओके. थैंक यू सर. है ना? बस थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है किसी. ठीक है. ठीक है? ओके. गुड. Recording stopped. नेक्स्ट आ जाओ यार. Good evening, sir. एक मिनट यार. Can I start, sir? Yes. Good evening, sir. My name is Recording in progress. I am from Andhra Pradesh. I have done my BTech in Chemical Engineering discipline from IOCL Newsfield, which is situated near Vijayawada. And I have done my pre-university course at IOCL Vangal. And my schooling was done at my hometown, ZPHS Menoluru. My final year project is about absorption of dyes from the effluents of dye effluents, and I have done my industrial training at Josil Limited, which is a soap manufacturing company. Yes, sir. Soap manufacturing company. So you must have known about the surface tension. Yes, sir. What is surface tension? Surface tension is the inward pulling a force exerted on the liquid molecule. Suppose if we take a tank of water on the surface, there is a force imbalance. The surface molecules will experience a larger force due to the
liquid molecules below that, but above air molecules will exert a lower pressure. So the shape of the liquid will be towards the downwards. It forms a spherical surface. Okay, can you tell me which fluid will have higher surface tension? So which soap will have higher surface tension? Suppose liquid detergent is being used, and somewhere a solid soap is being used, and you mix it with water, which will Yes, have the higher surface tension. The bubbles which we are generating has higher surface tension. sir, I'm not sure about it, sir, but I'm thinking that the solid soap will have higher surface tension. ठीक है, पेपर देख लेना उसको, ठीक है? Yes, sir. You must have learned about that extraction purpose, extraction unit operation. Yes, sir. I have worked under the vacuum distillation column, sir, where fatty acids were Vacuum distillation separate. column. Achha. Yes, sir. At what vacuum you were operating? It is around 60 mm Hg, sir. With whether it is a gauge. Yes, sir. Gauge 60 mm WG gauge. Yes, sir. Check on that whether it was gauge or absolute. Okay, sir. What is the atmospheric pressure equal to mm of Hg? 760 mm of Hg. So when you are saying 60, what does it mean? It is absolute. It is absolute. Or Yes, otherwise, you should have said minus 60. yes, sir. So then it has a gauge. Okay, why you have employed vacuum distillation? Why you applied vacuum in that? In order to reduce the, in order to make the components vaporize at the lowest temperature, sir. Why any particular Because thing? yes, sir. There are the components will degrade when we are treating them at higher temperature. So our goal is to separate that component from the mixture. So in order to do that, we apply vacuum and reduce the boiling points. How the boiling point is reduced when you apply the vacuum? Like under vacuum, at the lower pressure, the liquid will boil at the lowest temperatures. So Why? don't. Why it is like that? I'm not sure about it, sir. I will do. एक बार पढ़ना that your partial pressure is equal to mole fraction into PAV. PAV Yes, is sir. your vapor pressure. Okay? Yes, sir. And vapor pressure is a function of temperature. Yes, sir. Okay? So when you reduce the overall pressure, okay, the partial pressure will reduce, and the liquid when the liquid boils, when the partial pressure of that component is equal to the vapor pressure. Vapor pressure. Okay? Yes. So when you are reducing the overall pressure, then you are reducing the partial pressure also. Yes. That's why it works like that. Ki when you reduce the pressure, the partial pressure reduces, and at particular temperature it matches with the vapor pressure. Okay? So when you are saying that vacuum, so how it is reduced, you should also know that. Okay. Okay. Okay, vacuum distillation column. How many trays were there? It is actually a packed bed column, sir. Packed bed column. What was the height of the column? It is about 20 meters side, sir. I'm not sure about it. Okay. What is HETP? Height equivalent to theoretical plate, sir. What does it mean? Like in a packed bed, the height of the packed bed which employs the same separation as the theoretical plate will do. Okay, good. Okay. What was your product? How much purity you were withdrawing? There light fatty acids is about 4,300 kg per hour, sir. What was the concentration? Concentration. You must be separating two components, huh? Yes, sir. So there must be some concentration from where you have to enrich.
Yes, sir. It is 92%, sir. Are you sure about that 92%? No, sir. I have to look into it. You have to look into it. ऐसे हवा में नहीं मारना है कुछ, ठीक है? From how much feed to how much percentage of feed you have to check, ठीक है? Okay, sir. कि from what 30% or 40% maybe to up to 92%, ठीक है? So Okay, you sir. first check on that, ठीक है? Yes, sir. Second thing is if that product was from top side or from the bottom side. From the top side. Okay, if I want to increase the purity of the product, what will I do? We can increase the reflux ratio, sir. Reflux ratio will क्या होगा reflux ratio बढ़ाने से? Like after condensing the light fraction, the portion of the distillate which we are feeding back to the column is called reflux ratio, sir. Reflux ratio. तो होगा क्या उससे? What will happen? Like if we increase the reflux ratio, in the column while it is in contact with the vapor, whatever the undesired or low volatile components present in the liquid will be transferred to the vapor phase. Then you have learned the McCabe-Thiele method, no? Yes, sir. What will happen in that if you increase the reflux ratio? It will increase the reboiler duties. Load on reboiler. How will it affect the purity? Purity will increase. How? बस इसको देख लेना, ठीक है? कि that what we call that operating line will shift. Yes. Okay. As you increase now, because what is the operating line slope? Slope will change. Yes. Slope will change. Any other subjects you like? Yes, sir. Heat transfer and chemical reaction engineering. Chemical reaction engineering. So what are the different type of reactors you know? So, batch reactor, continuous stereo tank reactor, and plug flow reactor, packed bed reactor. Okay. So where to employ what? Suppose the order of reaction is 2. Yes, sir. What will you use? If the order of reaction is 2, then it is better to go with the PF first. Why? Because in continuous stereo tank reactor, the concentrations are maintained at very low, sir, due to mixing. In PFR, mixing won't happen. The concentrations are maintained at a higher level. उससे क्या होगा? It will help in what? It will increase the rate of reaction and less volume will be required. Okay. To meet the desired conversion. Correct. Okay. If I have a zero order reaction, yes, then what I will use? In that case, it is better to use CSTR. Why? If the concentration is independent, so I can use PFR also. Why to use CSTR? ठीक है, इसका देख लेना. Or which has a more volume? So if you for the same reaction, if you are using a CSTR and for the same reaction you are using a PFR, which will have the more volume? For the second order, sir. For second order. CSTR will have more volumes. Okay. And when you go into the first order? Both will have the same volumes. And for the zeroth order? Why in the first order it will have the same volume? Because the rate of the reaction is independent of the initial concentration. Can you tell me the empirical formula by which first order reaction is decided? By the rate of reaction for the first order? Minus RA equal to KCS. KCS is the okay. But as you said, the first order mate is independent of the reaction. So that conversion has an empirical formula. Yes, sir. What is that? Conversion equal to 1 minus exponential of minus KT. 0.693 by K. Yes, sir. 0.693 by into tau. Space time. Okay. ठीक है. आपको कुछ पूछना है? No, sir.
Just any suggestions where I need to improve? Suggestions तो basically क्या है कि that project which you are doing na, when you are saying I have done some project or some industrial training you have done, ठीक है? Yes, sir. So when you are saying something like column, ठीक है? So the basic thing I have asked, ठीक है? So you should prepare on the basic things. What is the pressure? What was the temperature? Yeah, how Yes. we increase the reflux ratio will how big? What was the height of the tower? Because 20-meter tower is a huge tower. Yes, sir. Okay. So you just whatever you say, you just check on the things. Okay. Okay, And sir. if you don't remember anything, if you are not remembering the exact concentration, just tell them, sir, I am not recollecting. Yes, sir. क्योंकि क्या है कि if somebody knows nothing, then Yes, sir. he will question and he will doubt you. Yes, sir. ठीक है, so try to do that. बेसिक अच्छा Okay, है, रिएक्शन इंजीनियरिंग पे अच्छा है आपका, रिफ्लक्स वाले yes, में भी अच्छा आंसर दिया, ठीक है, so कोई दिक्कत okay, नहीं। sir. बस ये वाला थोड़ा चीज सुधारना है, ठीक है, Okay, sir. और थोड़ा वॉइस में थोड़ा सा तेज बोलना है, ठीक है, थोड़ा Okay, सा sir. वॉइस आपका थोड़ा डाउन आ रहा है जिसकी वजह से वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो दिखाई दे रहा है ना, Okay, sir. जो भी बोलना है अच्छे से बोलना है, बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, Okay, sir. ऑल द Thank you, बेस्ट, sir. ऑल द बेस्ट। Recording stopped. एक मिनट है, हाँ, Good morning, sir. Recording in progress. Sir, my name is Ashish Chaturvedi. Hmm. I belong to Kannauj district of Uttar Pradesh. I have completed in BTech from Motilal Nehru Institute of Technology. My final year project was microbial fuel cell. Any industrial training? No, sir. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया होगा आपने थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद? नहीं सर किया। क्यों नहीं किया? सर क्योंकि सेकेंड ईयर में सर मेरे सप्लीमेंट्री था, तो इस वजह से उस समय सप्लीमेंट्री एग्जाम थे, तो इस वजह से नहीं जा पाए थे। थोड़ा ये आंसर थोड़ा ठीक से प्रिपेयर कर लो यार, ऐसा मत बोलना, ठीक है, ये नहीं बोलूंगा। मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? यस सर। मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, फिर भी इसका थोड़ा गोलमोल आंसर अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो कब पास आउट हुए आप? सर 24। अभी क्या कर रहे थे उसके बाद? अभी सर प्रिपेयरिंग कर रहे थे सर। प्रिपरेशन कर रहे थे, हाँ, ठीक है। कोई सब्जेक्ट है आपके कोई फेवरेट? सर हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, अच्छा ये बताओ यार, ये अपना लैमिनार फ्लो होता है ना? हाँ सर। और टर्बुलेंट फ्लो होता है, इस फर्क क्या होता है दोनों में? लेमिनार फ्लो में जैसे पाइप के केस में है, तो पाइप के केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो एक पैराबोलिक बनाती है। पर टर्बुलेंट के केस में क्या है कि अगर फ्लो जो है उसमें जिगजैग मतलब जिगजैग फॉर्म में वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी रैपिडली चेंज हो रही है, मोमेंटम ये तेजी देखो के यार, साथ ट्रांसफर हो रहा है। जिगजैग में कभी वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है, उसका क्या है, लीनियर रहेगी और बहुत देर तक वो सेंटर में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, जिगजैग वेलोसिटी कैसे हो सकती है किसी भी चीज? सर लॉगरिथम वेलोसिटी जो प्रोफाइल होती है वेलोसिटी टर्बुलेंट प्रोफाइल जो होती है ना, वो क्या है उसका बेसिकली, इसका देखो, दिस इज फॉर द लैमिनार फ्लो, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिस दिख रहा है इज सर। पैराबोलिक, दिस इज फॉर द लैमिनार फ्लो, दिस इज फॉर यस द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। यस सर। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो बहुत डिस्टेंस तक रहेगी, ठीक है, जिगजैग वेलोसिटी नहीं होती उसमें, किसी भी पाइप की जिगजैग वेलोसिटी नहीं हो सकती, कांस्टेंट रहेगी सर। मतलब नहीं, वॉल पे जीरो रहेगी और थोड़ा वॉल से प्रोग्रेसिव रहेगी और इधर से प्रोग्रेसिव रहेगी, ठीक है, और सेंटर पे कांस्टेंट हो जाएगी, लगभग मेजर डिस्टेंस में वो कांस्टेंट रहेगी,
ओके सर। लेमिनार फ्लो में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। पैराबोलिक होता है ना, तो एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम रहेगा, और टर्बुलेंट में एक पर्टिकुलर लेंथ में वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जिगजैग कुछ नहीं होता। वेलोसिटी जिगजैग कैसे होगी? बिकॉज सर मैं सोच रहा था कि वेलोसिटी, क्योंकि टर्बुलेंट में वेलोसिटी चेंज होती रहती है ना सर, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? टर्बुलेंट मतलब कुछ भी नहीं है यार। टर्बुलेंट में कैसे वेलोसिटी चेंज होती है? घर में नल में पानी आता है, यस सर, नल को धीमा खोल के देखना तो क्या होता है? एक लाइन से बनाते हुए अगर हाँ, वो क्या है? एक लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। वो नल को फुल स्पीड में कर देना, तो एक हाँ, ब्राइड बॉड एरिया कवर ब्रॉड एज करके। में रहेगा, मगर वेलोसिटी जिगजैग नहीं होगी। वेलोसिटी अभी भी मोस्ट ऑफ द सेंटर पार्ट में सबसे फास्ट रहेगी। ठीक है, जिगजैग वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, चलो ठीक। तो क्यों होती है, रीजन पता है इसका? पैराबोलिक क्यों होती है और इसका लॉगरिथमिक क्यों होता है? पैराबोलिक सर, क्योंकि हम नेवियर स्टोक इक्वेशन से सर हम्म, लेमिनार के केस में निकालते हैं, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन में हम 3 फोर्स को बैलेंस कराते हैं सर। एक प्रेशर फोर्स, हम्म, एक विस्कस फोर्स, हम्म, और एक ग्रेविटी विस्कस ग्रेविटी फोर्स किसको बोलते ग्रेविटेशनल फोर्स सर। हैं? तो अब तो जब इसको सब सॉल्व उसको करते बैलेंस हैं, कराते हैं तो क्या होता है? तो जब सॉल्व करते हैं हम्म, सर, तो जो शियर स्ट्रेस का इक्वल टू जो होता है वो, हाँ, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई टू, जो सॉल्व करते हैं तो हम्म, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है सर, आर स्क्वायर के फॉर्म में आती है। तो दैट्स वाई जो वेलोसिटी प्रोफाइल है सर, वो पैराबोलिक है। हम्म, ठीक है, चलो। और ये बताओ, अच्छा, कितने हीट हीट ट्रांसफर पढ़ा है? कितने तरह का हीट ट्रांसफर मोड, क्या क्या है हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर के सर 3 मोड हैं सर, एक कंडक्शन, हम्म, कन्वेक्शन हम्म, एंड रेडिएशन। अच्छा, तो अभी ठंड आ गई है, ठीक है, यस सर। तो अभी अपन आग तापते हैं ना, लकड़ी जला के आग तापते हैं। यस सर। हाँ, तो क्या क्या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो? सर इसमें सर कन्वेक्शन भी होगा सर, और मेजोरिटी रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी सर रेडिए कन्वेक्शन ही सर है। कन्वेक्शन है क्या कि रेडिएशन है? बोथ सर है, पर एग्जैक्ट नहीं पता कि अमाउंट किसका ज्यादा है। सोचो सोचो, टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो। क्या चीज सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती तो सर रेडिएशन पे, रेडिएशन है? मोर रेडिएशन। होगा सर। हाँ, क्योंकि रेडिएशन में क्या होगा, टेम्परेचर की पावर 4 से चलता है वो। यस सर। ठीक है, तो जब हम आग तापते हैं इसलिए हम आग से दूर रहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन कम क्यों होगा? क्योंकि क्या है, स्टिल एयर है बीच में। ठीक है, तो नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए वो कम रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको रेडिएशन से रहेगा। ठीक है, आइए मान लो ये अपना एक हीट एक्सचेंजर है। कितने यस तरह सर। के हीट एक्सचेंजर होते हैं अपने वैसे? सर बेसिकली वैसे सर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइड, मेनली 2 टाइप्स के हीट एक्सचेंजर होते हैं। एक डायरेक्ट फ्लो हीट हम्म, एक्सचेंजर, एक डायरेक्ट कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर एंड डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। हम्म, हम्म, हम्म। तो डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट वाला बताओ इनडायरेक्ट एक। इनडायरेक्ट को मतलब कांटेक्ट में सर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हम्म, सेल एंड कांटेक्ट टाइप में सर, जैसे कूलिंग टावर है, वो कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है सर। हाँ, कूलिंग टावर में क्या होता है? कूलिंग टावर में सर इवापोरेटिंग कूलिंग के थ्रू सर हम जो वाटर इन हो रहा है उसको हम हम्म, कूल करते हैं। कैसे कूल करेंगे, क्या होगा मतलब उसमें? प्रिंसिपल सर ये बेसिकली ये है सर कि इवापोरेटिंग मेन प्रिंसिपल सर इवापोरेटिंग कूलिंग है, एंड वेट वॉल टेम्परेचर यहाँ पे डिसाइड करता है कि कितना जो वाटर है कितना कूल होगा। तो सर जैसे कूल। हम्म, तो
कूलिंग टावर सर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं सर, एक नेचुरल ड्राफ्ट टावर एंड एक कूलिंग मैकेनिकल टावर ड्राफ्ट टावर। मतलब हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट अपन ने बताया ना, कैसे हो रहा है उस हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर सर बेसिकली कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है सर उसमें। कैसे हो रहा है? तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, तो हो कैसे रहा है? इवेपोरेटिव कूलिंग वर्क कैसे कर रही है? वो पानी उड़ा के ले गया तो पानी कैसे ठंडा हो गया? सर क्या होता है कि क्योंकि जो एयर हम यहाँ पे इन कर रहे हैं उसमें उसको ड्राई है, तो ड्राई है, तो ड्राई होने की वजह से जो एयर में पार्शियल एयर में जो वेपर उसका पार्शियल प्रेशर सर कम होगा, और क्योंकि जो वाटर है वो तो वाटर के जो वाटर के आसपास के एरिया जो होगा उसके बाद वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ड्यू टू वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से इवेपोरेशन हो रहा है। जब इवेपोरेशन हो रहा है कूलिंग, तो इस वजह से सर कूलिंग होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेना आंसर को। ठीक है, अपना बेसिकली क्या है, एयर जब जा रही है ना, गर्म एयर जा रही है, ठीक है, तो गर्म एयर क्या करेगी कि वो अपनी हीट किसको देगी? पानी को देगी, और पानी को हीट देके क्या करेगी? उधर से पानी उड़ाएगी। अब पानी से वो क्या है, हीट निकाल रही है। एयर जो है ना, पानी से हीट निकाल रही है। कैसे निकाल रही है? बाय इवेपोरेशन। जब वो हीट उससे निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो पानी हो जाएगा वो ठंडा होने लगेगा। सर ठीक है, मैं सर मतलब पढ़ा कि एक कंडक्टिव हीट ट्रांसफर होगा सर, मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा तो जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से सर हीट ट्रांसफर होगी सर। टेम्परेचर और एक ग्रेडियंट का जरूरी नहीं है। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर इक्वल भी हो तब भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, तो वो सर हो सकता है क्योंकि वेपर प्रेशर डिफरेंस है, इस वजह से भी हीट जैसे ट्रांसफर हाँ, होगा। वेपर प्रेशर डिफरेंस नहीं बोलना है। जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जब हम ओके सर। लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो उसमें बोलेंगे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इन एयर है, वो कम है। ओके सर। ह्यूमिडिटी क्या होता है तुम्हारा? Humidity is basically amount of water present in 1 kg of dry air, humidity है। फॉर्मूला क्या है उसका? पीए बाई नहीं नहीं सर, वो पीए मतलब डिपेंड, ह्यूमिडिटी भी क्लासीफाइड 2 तरीके से, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ड्राई 1 kg ऑफ ड्राई एयर। हाँ, तो उसको कैसे अपन डिफाइन करते हैं? फॉर्मूला में कैसे डिफाइन करते हैं? फार्मूला सर बेसिकली ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑफ वेपर, सो वाटर मॉलिक्यूल्स या डिवाइड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। यस ठीक सर। है, तो जितना ज्यादा ड्राई गैस होगी उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उसका कम होगा, यस उतनी ज्यादा उसकी रिलेटिव उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगी। यस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस पॉइंट सर पे आके ड्राई सेम हो जाते हैं? किस पॉइंट पे आके सेम हो जाते हैं? तीनों सेम हो जाते हैं। सिर्फ तीनों कभी सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पहले बताओ। जब सर एयर एयर सैचुरेटेड हो तब हो सकते हैं सर। जब एयर 100% सेचुरेटेड हो जाएगी तब अरे तीनों टेम्परेचर वो मैच कर जाएंगे। यस सर। कभी ऐसा हो सकता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे चला जाए? नो सर, मतलब बेड वॉल टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नीचे नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो सर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा सर। जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, सिंपल। वेट बल्ब टेम्परेचर डिपेंड करता है एयर का टेम्परेचर। ठीक है, अब Yes. वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे कभी नहीं जा सकता। वो या तो ड्यू पॉइंट के इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। अच्छा मान लो कि किसी का वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा है, हाँ? ठीक है, तो वो कूलिंग टावर के मतलब कूलिंग टावर एक मान लो, कहाँ रहते हो तुम अभी? क्या सर? कहाँ रहते हो? रहते कहाँ हो? सर कन्नौज में सर। कन्नौज में रहते हो। कन्नौज में अभी ठंड चल रही है, ठीक है। यस सर। ठंड में एक कूलिंग टावर लगा है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। और मान लो कि तुम्हारा कूलर है घर में ना, तुम्हारा कूलर, हाँ सर। कूलर है, ठीक है। बारिश में कूलर सही से काम नहीं करता है, ठीक है। हाँ सर। गर्मी में कूलर सही से काम करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? सर पहले सर उसका आंसर कूलिंग टावर का सर कि कूलर का सर हाँ, था। किसी का भी दे दो, कूलिंग टावर का दे दो। मान लो कि एक कूलिंग टावर राजस्थान में लगा हुआ है, एक कूलिंग टावर लगा हुआ है कश्मीर में, तो कौन सा कूलिंग टावर बेटर परफॉर्म करेगा कूलिंग टावर के टर्म्स में?
कूलिंग मतलब कूलिंग टावर की जो इफिशियंसी है वो इसलिए वेट वॉल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्यों क्या होता है कि जब सर्दी जब जैसे विंटर आती है तो वेट वॉल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ड्राई वॉल टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जब वेट वॉल टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ड्राइनेस, जो एयर में ड्राइनेस इंक्रीज होती है। जैसे अभी सर्दी में क्या है कि हमारी जो स्किन है वो भी ड्राइनेस फील, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो मतलब जो अगर कश्मीर में अगर कोई कूलिंग टावर लगा हुआ है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इस चेक करना विंटर है, में। ऐसा नहीं है। वो क्या है, तुम्हारा वेट बल्ब टेम्परेचर घट रहा है मगर साथ साथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी घट रहा है ना। हाँ सर। तो इसी तरह जो इफेक्टिवनेस है, जो राजस्थान में कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर के रिस्पेक्ट में, कूलिंग वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं, कूलिंग टावर के रिस्पेक्ट में, जो तुम्हारा राजस्थान में लगा है कूलिंग टावर, वो हमेशा अच्छा काम करेगा। ठीक है, कूलिंग टावर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के टर्म्स में नहीं। टेम्परेचर उधर ठंडा ज्यादा हो जाएगा मगर वो काम नहीं करेगा बेसिकली। मतलब ये हो सकता है सर कि जो मतलब वाटर तो सर इसमें ज्यादा कूल अभी होगा देखो जो। क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर इतना, ड्यू पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर इतना नीचे आ गया है, ठीक है, कि उस पर उसके पास मार्जिन नहीं है नीचे जाने का ज्यादा, तो कम वेपर एब्जॉर्ब करेगा। कम वेपर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका रेंज कम हो जाएगा, कूलिंग टावर का जो रेंज है वो कम हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू कूलिंग टावर उसका रेंज कम रहेगा, और राजस्थान में उसका रेंज ज्यादा रहेगा। मगर परफॉर्मेंस पे देखोगे कूलिंग वाटर टेम्परेचर कहाँ कम हो रहा है, तो वो कश्मीर में ज्यादा कम होगा। मगर जो मतलब रेंज रेंज देखोगे पर्टिकुलर वो, सर कूलिंग हाँ, टावर के respect में। रेंज जो है वो कहीं और पर डिपेंड करेगा। ठीक है यार, तुम बताओ क्या चाहिए। और ठीक है, तुम कुछ पूछना चाहते हो, फिर मैं बताता हूँ। फिर सर इफेक्टिव वे में सर जो आंसर है, मतलब एक हमको लग रहा है कि सर इफेक्टिव वे में नहीं बता पा रहे आंसर। हाँ ठीक है, पहला तो और कुछ जानना है तो बताऊं फिर। और सर यही सर मेन प्रॉब्लम हमको अभी लग रही सर। फर्स्ट तो पहले तो क्या है ना, ये अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम एग्जाम वाला मत बोलना, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कुछ और तुम जवाब ढूंढो, ये नहीं बताना है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम था इसलिए नहीं जा पाए, ऐसा वैसा, ठीक है। कुछ और ढूंढो यार, कुछ तो आंसर। सर सर कंपलसरी भी नहीं था हम कॉलेज में कि जाओ आप। कंपलसरी नहीं था इसको यार, कैसे बताओगे कुछ तो, मतलब ऐसा ये मत बोलो यार कि सप्लीमेंट्री एग्जाम था इसलिए जा पाए, तो फिर थोड़ा बैड इंप्रेशन जाता है ना। थोड़ा सा सोचो कुछ। सर आप ही से बता दीजिए तो मेरे को सर। मतलब मैं तो बोल देता हूँ कि मतलब कि था, जाना था, मेरे घर से दूर था, मैं 1-2 दिन गया था मगर फैमिली इशू हो गया तो घर वापस आ गया, या नहीं जा पाया, कुछ फैमिली इशू हो गया। सर किसी में सर कहाँ पे गए थे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सर पूछने लगे। या फिर नहीं जा पाया, फैमिली इश्यूज की वजह से नहीं जा पाया, कुछ फैमिली इशू हो गया था, मेडिकल इशू हो गया था इसलिए नहीं जा पाया था। फैमिली में मेडिकल इशू हो गया, अपना मेडिकल इशू मत बताना, ठीक है। अच्छा। फैमिली का मेडिकल इशू कुछ हो गया था तो नहीं जा पाया मैं, ये बताना है, ठीक है। ओके सर। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम था, ये सब क्या है, थोड़ा गलत इंप्रेशन देता है, ठीक है। मतलब वो ईयर लॉक बैक, ईयर लॉक तो नहीं है ना, नहीं सर। ईयर लॉक नहीं है ना। तो मार्कशीट पर रिफ्लेक्ट करता है क्या तुम लोग का सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए। मार्कशीट में सर नहीं, कम जो ट्रांसक्रिप्ट आती है सर उसमें रिफ्लेक्ट करता है सर। डिग्री डिग्री आ गई होगी, डिग्री में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना। एक ट्रांसक्रिप्ट जो डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट मिली है ना सारे सेमेस्टर का, एक नहीं, उतना कोई नहीं दिखता यार, डिग्री में कितना परसेंटाइल है। सर 72%। हाँ ठीक है, तो ये बता देना, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला छोड़ देना, यस। ठीक है। कि मेडिकल इशू था थोड़ा फैमिली में, तो उसी टाइप पे मैं नहीं सर जा ये पाया। सर ये जो गैप को सर, जैसे गैप बोले कि 24 गैप तो में एक सर। साल का ही है ना, गैप एक साल का ही इशू नहीं है, एक साल चलता है। सर एक साल का वो, 1.5 साल हो गया सर। नहीं नहीं, मतलब बोला अरे तो बोलेंगे ना सर, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे हम लोग, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, गेट प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं। 2-3 साल गैप वालों को सोचना पड़ता है। एक साल, एक साल तुम 24 में तो पास आउट ही हुए हो यार, अभी तो निकले हो, तो गैप का टेंशन मत लो, गैप का सिंपल बोल देना सर प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे तभी तो आए ना इंटरव्यू देने, बिना प्रिपरेशन कैसे आ जाए, ओके सर। ठीक है। तो ये थोड़ा, ये पहला वाला आंसर ही थोड़ा गलत इंप्रेशन डाल देगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, ठीक है। दूसरा सर क्या है, कौन, सर कौन पहला वाला सर, ये सप्लीमेंट्री वाला जो है। सप्लीमेंट्री वाला, ठीक है। ओके सर।
ठीक है, क्योंकि वो अगर मेरे को बस मतलब यही लग रहा है कि सर कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी नहीं मेरे पास है। नहीं मतलब तो वही ना, उसको छुपाना है ना, तुम्हारी कमजोरी तो उसको बता क्यों रहे हो, तुम्हारे का ये प्रोजेक्ट नुकसान है। सर प्रोजेक्ट पे सर वर्क किया था। हाँ तो प्रोजेक्ट तुमने बताया, अच्छा है, पहले तो अपना थोड़ा इंट्रो लंबा करो, 3-4 लाइन का ये इंट्रो था, करीब 7-8-10 लाइन का बनाओ यार। यहाँ ठीक है से सर। स्कूलिंग करी है, ये करा है, ये करा है, कुछ कुछ अवार्ड जीते होंगे, कुछ कुछ अचीवमेंट होंगे, ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा, ऐसे बोल दो कौन चेक करने जा रहा है, बता दो कुछ कुछ, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला कुछ मत बोलना, सप्लीमेंट्री वाला हटा देना, पहले लिख के 7-8-10 लाइन का अपने एक इंट्रो बना लो, ये क्या बताना है, और रोज रोज उसको प्रैक्टिस करो ताकि वो बता दोगे। दूसरा सप्लीमेंट्री एग्जाम वाला नहीं बताना है, लिख लो उसको, नहीं बताना है, ओके ठीक है, सर। ठीक है। तीसरा जो है, कूलिंग टावर वाले में अच्छा आंसर दिया तुमने, ठीक है, और तुम्हारी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, वो अप्रिशिएट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, क्योंकि मैं तो कूलिंग टावर वाले एरिया में गया तो जो पूछा उस पर तुमने बताया, तो ऐसा कुछ नहीं। और चौथा क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसका पहले क्वेश्चन पूरा हो जाने दो, ओके सर। ठीक है, और फिर उसके बाद अपना आंसर दो। मतलब मेरे को सर कॉन्फिडेंस मतलब आता है सर, पर एक्सप्रेस सर नहीं हो पा रहा है मतलब मेरे नहीं, से। एक्सप्रेस हो जाएगा, उसका कुछ नहीं करने का है, उसका बस उसका क्वेश्चन पूरा होने देने का है, ठीक है, और तुम्हारा अप्रोच सही है तो अप्रोच सही करके अपना आंसर देने का है बस, और पर कुछ नहीं सर करना। मतलब मेरा मेरा सर ये है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट क्या रहेगा, जैसे आपने सर शुरुआत में सर लेमिनार पूछा, मतलब पहला क्वेश्चन था सर नहीं नहीं, पहला फुल कुछ, ड्रेस वो तो मैं हूँ यार, मतलब कोई और होता तो कुछ और पूछ लेता, मतलब ऐसा कुछ, मतलब कोई भी कुछ भी पकड़ लेता है ना, तो वो पकड़ लेता है, वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कोई क्या पहला क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कुछ रिटर्न नहीं है, ये ठीक है, तो सर स्टार्टिंग जो वर्ड होता है मतलब वो सर स्टार्ट सर कैसे करेंगे, मतलब कोई सर सर स्टार्ट कुछ तो सर। स्टार्ट तो वही है, बेसिकली थोड़ा टाइम हो रहा है, मैं बता देता हूँ। स्टार्ट पहले क्या है कि अपना इंट्रोडक्शन 7-8-10 लाइन का बता लो, ठीक है, ऐसा बताओ कि उनको उसी में से पहले 1-2-4 क्वेश्चन पूछ लें वो उसमें से, ठीक है, कि जैसे प्रोजेक्ट में अगर तुमने पढ़ा होगा तो अच्छे से प्रोजेक्ट पढ़ के जाना, उसमें जो जो यूनिट ऑपरेशन यूज हो रहा है वो पढ़ के जाना, ताकि 2-4 क्वेश्चन तुम ऐसे निकाल दो, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने पूछ लिया, ठीक है, अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इसको अपन से नहीं बताना, बाकी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट होने देना है, क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर बराबर देना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। सर मिनवाइज वे में मतलब सर आंसर दे सकते हैं ना, मतलब कि एक हाँ, जितना लंबा। क्वेश्चन पूछे नहीं उतना ही आंसर देना है, अगर उसको आंसर तुमको कट शॉर्ट करना, अगर वो कट शॉर्ट कर रहा है ना, तुम्हें रोक रहा है, तो वहां पर रुक जाना। ओके सर। अगर वो बीच में तुम्हारे आंसर देते देते ही वो कुछ क्वेश्चन पूछने लगा, तो उसका मतलब है तुम्हारे आंसर में उसको कुछ डाउट आया, इसलिए पूछ रहा है वो, वरना वो वेट करेगा, ठीक है, तो इतना रुक जाना, ठीक है, बाकी ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। Recording stopped. Hello, sir. Good evening. ठीक, Sir. हाँ Yes, sir. Good evening, Recording sir. in progress. यार, ये तुम कल भी आए थे ना? हाँ सर, आज फिर से शेड्यूल किया ना। अच्छा, फिर से किया, वो बोला कि मैंने एक मॉक ले लिया तो कोई दूसरा लेगा मॉक, कभी वो बोल रहा था। अच्छा, ऐसा है। 3 अलग-अलग लोग हैं ना, ऐसा नहीं, बोला एक्चुअली मैंने 5 मॉक लिए, तो मुझे लगा आज भी शेड्यूल कर सकता हूँ, इसलिए। नहीं ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, माय नेम इज यश पगारे. I have done my schooling from Aurangabad, Cambridge School, Aurangabad. After that, I have done my 11th and 12th from Springdale Junior College, Aurangabad. And after that, I have done my graduation from Institute of Chemical Technology, Mumbai, which was from 2021 till 2025. And during that period, after my third year, I have done internship with KLJ Group, in which I have worked on minor projects like material safety data sheet for EO plant, and I have also seen the working of the distillation column for L'Oreal alcohol ethoxylate. ठीक है, पहले तो तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत थोड़ा इसको सही करना है 2-3 दिन में। हाँ, कब है इंटरव्यू? 28 28 एक हफ्ता है और।
हाँ, तो दवाई ववाई खा के इंटरव्यू सही करना है, ठीक है। हाँ दूसरा क्या है, व्हाट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट? सर, बेसिकली सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर इथिलीन ऑक्साइड प्लांट क्या क्या होने चाहिए, फर्स्ट एड मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, वेंटिलेट द एरिया, फिर वेंटिलेट द एरिया प्रॉपरली, फिर पीपी किट होना चाहिए। ये बेसिकली सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या क्या थे, मुझे उन्हें सजेस्ट करना था कि क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में डेटा क्या क्या आता है? सर फर्स्ट एड मेजर्स आता है, फिर हजार्ड्स आता है। नहीं, ये आप हैजार्ड्स में क्या क्या आता है? व्हाट इज मतलब मैंने सर तो वो फ्लेमेबल है, इथिलीन ऑक्साइड इज फ्लेमेबल, फिर हाँ, ओपन टू फ्लेम को वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। फिर तो ठीक है, यू नो अबाउट एलईएल, एलईएल यूईएल, एथिलीन ऑक्साइड का एलईएल यूईएल है कुछ? लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, हायर एक्सप्लोसिव लिमिट। सर उसका मुझे ये पता है कि पीपीएम 1 ppm 5 ppm उसका एक्सपोजर लिमिट रहता है कुछ। नहीं, एक्सप्लोजन लिमिट क्या है? वो टॉक्सिक, तुम टॉक्सिसिटी में जा रहे हो। हाँ What are the different types of hazards? Flame is an hazard. Toxicity is an hazard. ठीक है, तो flammability is LEL UA, toxicity is about PPM. ठीक है, ओके। चलो ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे अपन, उतना कोई पूछेगा नहीं। डिस्टिलेशन कॉलम में कल मैंने कुछ पूछा था। हाँ सर, आपने वो हाँ प्रेशर का हाँ, बोला था, सही व्हाट है। वाज द प्रेशर? सर वो 0.023 बार था। 0.023 बार एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट 0.023 बार। ओके, एंड व्हाट टेम्परेचर दे वर ऑपरेटिंग? सर वो अराउंड 200 डिग्रीज पे वो उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा था। 200 डिग्री टेम्परेचर फ्रॉम द फॉर द बॉटम। सर टॉप से निकल रहा था। टॉप नहीं तो बॉटम का टेम्परेचर कितना था? बॉटम, अच्छा बॉटम का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टॉप का ज्यादा रहेगा? सर जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट, और जो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ऊपर से निकल रहा था, सॉरी जो लेस वोलेटाइल है वो नीचे था, और जो प्रोडक्ट है हमारा वो ऊपर था। ठीक है, तो एक कॉलम में, कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहता है? टॉप पे रहता है कि बॉटम में रहता सर टॉप पे ही रहता है। है? टेम्परेचर सोचो, क्या टॉप पे कैसे रहेगा? रिबॉइलर कहाँ रहता है? सर ही हाँ, हीट ड्यूटी नीचे से, अच्छा ओके, वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके वो वेपराइज हो जाता है, मोर वोलेटाइल वाला, तो तो नीचे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम में मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे रहता है, नीचे, यस। लेस टेम्परेचर ऊपर रहता ऊपर है क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही वेपराइज होगा ऊपर। है, वही होता है। ठीक है, चलो, और क्या है तुम्हारा फॉर्म्स वगैरह कल पूछा था क्या मैंने? हाँ सर पूछा था। क्या नहीं पूछा था फिर? रिएक्शन इंजन के बारे में बताओ यार, क्या होता है रिएक्शन इंजन? क्या बताता है? सर मतलब, कैटलिस्ट क्या होता है? सर इट इज बेसिकली अ प्रमोटर इन अ रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। वेदर कैटलिस्ट इज अ प्रोमोटर? नो, इट्स नॉट अ प्रमोटर। गलती से बोला मैंने, इट जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ इट इंक्रीजेस? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है तो कैसे इंक्रीज कर रहा है? इज दिस योर फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट है आपका ये? नहीं सर। ओके, क्या है आपका उसके अलावा? कंट्रोल पे है? सर कंट्रोल वॉल्व्स पता है थोड़ा। नहीं नहीं, कंट्रोल, प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस डायनामिक्स। Okay. So, tell me that what is the basic difference between a PI and PID controller? सर पी क्या पी बताते हैं? पी कंट्रोलर हम जब यूज करते हैं जब अगर लेवल कंट्रोल करना रहा, और पीआई कब करते हैं जब ऑफसेट हो जाता है, मतलब ऑफसेट जब आता है तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल यूज करते हैं। और पीआईडी डेरिवेटिव, मतलब जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स रहते हैं वो जब कंट्रोल करना पड़ता है तो पीआईडी। हाँ, तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज किस में आ सकता है? कौन सा कंट्रोल लगाऊंगा तो सडन एक्शन होगा मेरा, सडन इंक्रीमेंटल चेंज? मतलब वैल्यू सही हो जाएगा वो। वैल्यू सही हो जाएगा? हाँ पीआईडी सर। पीआईडी से जल्दी वैल्यू सही हो जाएगा, ऐसा है क्या? मतलब क्यों अगर हो जाएगा? अगर बेसिक कंट्रोल करना है, मतलब जैसे फ्लो या कुछ करना है तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ही यूज करते हैं। हम्म, ठीक है, इसको बताना है कि हमारा डेरिवेटिव कंट्रोल है। सो द एरर विच इज नाउ, इट इज इंटीग्रल से वो हैंडल होगा
and derivative will also know the rate of change of error. ठीक है? Okay. When it will know the rate of change of error, then it will easily minimize. ठीक है? The deviation. इंटीग्रल में ऐसे घूमता रहता है ना, और PID में ऐसे करके डैम्पन हो जाता है. हाँ. It will dampen the error. Oscillations कम हो जाते हैं उसमें. Because of its derivative nature. Yes sir. Okay. एक टू फिल्म थ्योरी होती है. टू फिल्म थ्योरी सुना है? सर एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है मुझे उसका. Okay. एक अपना ये होता है, क्या होता है, पेनिट्रेशन थ्योरी, टू फिल्म थ्योरी. पेनिट्रेशन थ्योरी बेसिकली वो कांटेक्ट टाइम पे डिपेंड होता है, कितनी देर के लिए वो कांटेक्ट है, वो मास ट्रांसफर, और वो अनस्टेडी स्टेट होता है. ठीक है. एक बाउंड मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर करके भी चीज होती है. क्या होता है वो? बाउंड अनबाउंड मॉइस्चर मतलब कांस्टेंट फॉलिंग पीरियड जो रहता है, कांस्टेंट जो रहता है ड्राइंग पीरियड, वो अनबाउंड मॉइस्चर का रहता है. और जब फॉलिंग रेट पीरियड रहता है तब वो बाउंड मॉइस्चर का रहता है. क्यों ऐसा क्यों रहता है? सर बिकॉज फॉलिंग कांस्टेंट फॉलिंग पीरियड, ड्राइंग पीरियड में मॉइस्चर उसमें से रिलीज होना चालू करता है, और कांस्टेंट पे इतना नहीं होता है जितना बाउंड में होता है. अच्छा. और पैकिंग जो होती है अपनी पैक्ड कॉलम में, दो तरह की पैकिंग होती है. हाँ सर. रैशिंग रिंग्स, पाल रिंग्स और रैश रिंग्स. पैकिंग कितने तरह की होती है? दो तरह की. एक रैंडम पैकिंग, स्ट्रक्चर्ड पैकिंग. हाँ, रैंडम और स्ट्रक्चर्ड. तो रैंडम का टाइप बता रहे हो आप? हाँ. रैशिंग रिंग है, और कौन सी रिंग होती है? पाल रिंग्स. बॉल रिंग्स. और सर इतना ही पता है मुझे. ठीक है. प्लेट्स कितनी तरह की होती है डिस्प्लेसमेंट कॉलम में? प्लेट्स, सीव ट्रे. सीव ट्रे. हाँ. हाँ. और कौन सा होता है? बबल कैप ट्रे भी होता है. और कौन सा होता है? वॉल ट्रे होता है. वॉल ट्रे. हाँ. ठीक. चलो ठीक है. ओके है. कल से तो अच्छा इंप्रूवमेंट है, आपने देखा है. हाँ ठीक है. सर. अच्छा है. कॉन्फिडेंस अच्छा है. इंट्रोडक्शन भी अच्छा है. तबीयत पे ध्यान देना है उस टाइम पे. हाँ सर तबीयत गड़बड़ रहेगी तो आधा ध्यान अपना तबीयत पे रहेगा, और सामने वाले का ध्यान भी आपकी तबीयत पे रहेगा. हाँ सर. ठीक है. तो आराम करना है, दवाई वही खा के. ठीक है. तो हाँ ये ठीक है सर. सर और मुझे ये पूछना था कि टेक्निकल में बेसिकली किस पे मतलब फोकस करना चाहिए? टेक्निकली एक्चुअली मैंने तुमसे कल पूछ लिया था, इसलिए मैंने इधर उधर क्वेश्चंस पूछे, वो वरना रिपीट हो जाते क्वेश्चंस. टेक्निकल में तुमने क्या है, कल एम्फेसाइज किया था, मैं तुम ही थे ना, तुमने एम्फेसाइज किया था कि मैंने डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन किया, तो आज नहीं बोला तुमने डिजाइन किए. वो अच्छा है कि नहीं बोला. ठीक है. बाकी वही जो मैंने पूछा था कल की प्रेशर कितना है, तो तुमने देख लिया प्रेशर कितना है. टेम्परेचर का जो था वो तुमने देख लिया था. ठीक है. और थर्मल स्टेबिलिटी देख ली थी. तो डिस्टिलेशन वाला तुम्हारा पार्ट हो गया है. ठीक है. इधर कंट्रोल वाला पार्ट भी ठीक है तुम्हारा, कंट्रोल वाला पार्ट में भी इशू नहीं है. रिएक्शन इंजीनियरिंग तुमने बोला नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट मैंने पूछ लिया है, तो इसलिए ठीक है. मतलब ऐसा कोई बॉदर करने की जरूरत. रिएक्शन इंजीनियरिंग से भी आ सकते हैं क्या सवाल? बहुत मतलब आ सकते हैं, रिएक्शन इंजीनियरिंग से भी आ सकते हैं. मतलब बेसिकली यही तो है यार, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड डायनेमिक्स और रिएक्शन इंजीनियरिंग. प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल से भी इतने नहीं आते. ओके सर. ठीक है. और लास्ट थर्मोडायनेमिक्स, अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स में जाएगा तो, जैसे इंडस्ट्रियल लोग थर्मोडायनेमिक्स में नहीं जाते हैं, मैकेनिकल वालों से ज्यादा जाते हैं, इसमें तुम लोग से नहीं जाएंगे. ठीक है सर, चलेगा. है ना. ठीक. तबीयत पे ध्यान देना बस. हाँ सर. थैंक यू सर. Recording stopped. नेक्स्ट कौन है? हेलो. Hi sir, am I audible? Yes, please. Hello, I'm Ashwinil and I'm coming from Kerala itself. I have done my schooling from Kerala itself. I have done my schooling up to 12th from Government Model High School. After that, I joined for Government Engineering College for BTech in Bachelor's in Chemical Engineering. Post that, I have done my Masters from IIT Kharagpur. So along my academical
academical period, I have done a numerous amount of projects, and among them, on some of the important projects that I have handled is on from the IIT Kharagpur. That is to employ the net zero emissions policy by production of a new catalyst for the catalytic reduction of nitrophenol to aminophenol along with a green hydrogen production. So that is basically a waste to energy pathway. And I have done my internship from KMML Kerala itself, that is Kerala Mines and Minerals Limited. Okay. That's also. So you told about green hydrogen. Okay. Yeah. What is green hydrogen? In the hydrogen, the method we are going to produce will be in different types. So if we are going for gray hydrogen, that means along with the production of hydrogen, some amount of carbon emissions will be present. So if you're going for carbon monoxide, that is to steam reforming of those things, at that particular moment, along with the hydrogen, carbon dioxide is also emitted. So that itself is causing a harmful to the nature. But in case of a green hydrogen, there won't be any pollution. Most of it will be converted to green products. Like we are using electrolysis. Electrolysis of these only products only produces a hydrogen that is along with some natural products, not with some carbon emissions. So the net amount of carbon emissions to the nature will be lower in case of the green hydrogen. Okay. Three types of hydrogen are there: green hydrogen, gray hydrogen, and one more hydrogen is there. Blue hydrogen. Okay. Like that for ammonia. Mixed of these two. Ammonia, I'm not that much aware about. Okay. ठीक है. अपना favorite subjects, you know, anything? Favorite subject will be heat transfer, chemical reaction engineering, mass transfer, thermodynamics. Okay. And fluid thermodynamics, you know. So can you distinctly tell me the difference between the first law of thermodynamics and the second law of thermodynamics? What does thermodynamics is dealing with the transformation of the energy. But even though it is dealing with the transformation of the energy, both of the laws, that is even the first law and the second law, is detailing about this transformation of energy. But the first law fails to explain how the energy is transformed. It's only explaining how much amount of energy is transformed. That is quantitative nature of the transformation of energy is only employed on this particular equation or the statement of that thing. But in case of a second law of thermodynamics, a qualitative nature of this thing is employed. Like in that case, we will explain how much energy can be converted into useful work, how much will be dissipated away, how much that gives the qualitative nature of the energy. So that's the main difference between the first law and second law. Should I explain that? Basic. Can you tell me about the refrigeration cycle? Refrigeration cycle, I'm not that much aware about since it's not in our core area. But I know that in a heat pump, what happens is that, as I mentioned earlier, as per the second law of thermodynamics, what it states that for energy to flow from a high temperature to low temperature, we don't need to do any excess work. It will itself produce a work. But in case of a refrigeration cycle, what we need to do is to pump from lower temperature to higher temperature. So we are employing work into the compressor. So it will only help to transfer the energy from lower energy to high temperature. Okay. Any Carnot cycle, you know? What Carnot cycle? Carnot cycle? No, sir. I'm only you know about just confident about the second law of thermodynamics. No, I'm mostly into the solution thermodynamics. I will be more confident about solution thermodynamics. Okay. What is fugacity? Fugacity is that most of the thing is focused mainly on pressure. That is, pressure is what we are looking into. But for a real gas, it will be different. Right? For all the laws are mainly derived based on the assumptions of the ideal gas. That is, there will be a negligible volume compared to that of the container. There won't be any intermolecular attraction also. Fugacity came in picture for a real gas. Fugacity is basically the amount of Gibbs energy, the pressure at that state, which it will give the same amount of Gibbs energy as that of the ideal gas. So it gives the variation from this thing. And also fugacity is useful when we are going to
mention about the chemical potential. Chemical potential basically employs the ability of the phase change. That is it, how much a particular compound can change from a particular phase to another phase. But it is mainly derived based on Gibbs free energy. But Gibbs free energy itself is derived from chemical properties like internal energy and all those. Those cannot be measured easily. There is where Figasty come in action. So Figasty can be used instead of this Gibbs free energy to account for the chemical potential too. Okay. Do you know about LMTD? LMTD? LMTD. Yes, sir. That is logarithmic. Oh, sorry. I was getting a call. Sorry for that. Okay. LMTD particularly means logarithmic mean temperature difference. It is mainly employed in case of the heat exchangers. So in a heat exchanger, what happens is two fluids at two different temperatures going either parallel counter current or any method means, but for a desired amount of energy transfer, a long length may be required. To decrease the length, we will increase the number of shells, number of passes. Sorry. So once we increase the passes, we can't directly take the arithmetic mean. So it will give a difference in this mean temperature difference. So for that purpose, we are employing the LMTD. LMTD will ensure a more efficient temperature. This thing in this case of last question. What are the flow measuring devices you know? Flow measuring devices in sense of what? In fluid mechanics. Flow measuring devices, nothing to do with fluid dynamics. Just I'm asking about what are the flow measuring devices you know? Just. I will say rotameters, venturimeter, orifice meter, pitot tube. So what is the basic difference between working of a pitot tube, venturimeter, and rotameter? Rotameter is basically based on, we will employ it in a flow in such that a float will be present. So based on the buoyancy effect, that will be the water will take away the float, and that will give a calibrated value of the particular amount of flow rate that it is passing through the rotameter. In case of a NGD meter, it is mainly working under as a principle of Bernoulli's equation. So as per Bernoulli's equation, we know that there is a trade-off between the potential energy, kinetic energy, and the velocity head. So since we know the height difference will be, if we are considering in a parallel way, height difference will be eliminated. So there will be a change in pressure energy and velocity energy only. So once we change the area as per the continuity equation, velocity will be changed. So if we are able to measure the pressure at these two junctions, this trade-off in the pressure will result in the velocity change. And using that, we can find out the velocity of the particular flow. And in pitot tube, what we use is principle will be the same. But at pitot tube, what we are doing is we are using the pitot tube to find out the point velocity. At some known value, we will employ a pressure tube, and that will give the pressure at that particular location. Again, we will employ a point where the nozzle, once the water hits that nozzle, that is not a stagnation point. So velocity will decrease, pressure will increase. With that trade-off in the pressure energy, we can employ it to find out the velocity. Okay. Anything you want to ask? Not confident in the area of petrochemicals. Just only in the petrochemicals, like the products like C1, C2, C3, C4. And what if they are going to ask from that area? First thing, in the intro, you have used that itself 2-3 times we have used. Okay? I am from Kerala itself. I have done engineering from Kerala itself. Okay? So that thing you remove. Okay? You just write it down your introduction so that you will come to know what here and there are going. Okay? In the starting, you are something little much uneasy. Okay? Okay? In the starting. Okay? So uneasy nahi hona hai. Okay? Be calm as you for the rest of the interview you were calm, but in the starting you were a little bit uneasy. Okay? So you just write it down in your introduction and it will do. And the answers you are giving are more elaborative. Okay?
Okay. You don't go for an elaborative one. Okay? You just go point by point. The thing, because in the flow question, flow measuring devices, you have answered good. Okay? But with relation to fugacity, okay? I was just asking the fugacity. You just have to told me the one line definition. This is the fugacity. If because some questions you have to keep it with yourself. Okay? Okay? If I'm asking about something, okay, you just keep it with yourself so that next question when arrives, you can answer that also. Okay? Based on the matrix. Okay, so you have to just control the length of the answers. Okay? They are becoming quite huge, and it also tells you that you have a good knowledge. Okay? That's a good thing also, but it's just a suggestion. If you want to implement, you can implement. Yeah, that's nice one. I will try to implement that. That way. And regarding with respect to, I have not asked about because you are a good candidate. So, what do you know about IOCL? You know about something? Yeah, of course, sir. Should I explain? As far as I know, IOCL is the #1 industry in oil and gas sector in India itself. So it is also considered as one of the 500 Fortune global industries that is being published by the Fortune's list by Forbes magazine. It has a annual turnover. We can call it as a $1 billion company, and in terms of pipelines and the network it has created all over the India, it runs over 20,000 kilometers, where it was able to deliver to most of the remote regions also. In the production capacity, it is considered as one of the higher top notch in this industrial area itself. Right now, they are going a lot of expansion is going on in the Panipat refinery and all, where and also even in this stage where the energy transition is taking place, where there is a talk that there will be no life for this kind of petrol and all. IOCL has taken the first steps to implement more green initiative projects, and like around 8,000 outlets were itself open with the availability of E20 petrol and all. So even at this transition period, IOCL has already stepped in with this, and also their CSR, that the community social responsibility of the of this industry is appreciable. It has used around 100 crores in the previous year for the purpose itself, like for the planting of 7 lakh trees all over the India and all. So okay, good. I will say that this will be one of last thing. Okay, there is something asked about that location part. How will you cope with the other remote locations with this? In another, when you are placed in any remote location of IOCL, how will you handle this? I will say that adaptability is one of my key features that I can show as my characteristics too. So I don't find it is just that a much. simple answer. I am suggesting you can change it also. You just say I have done that IIT, that MTech from IIT Kharagpur. Kharagpur. So Kharagpur. IIT Kharagpur. So that was not a problem for me. That was also quite a distance away from my home. So I have already done it. I'm okay with all the locations. Just one line answer. Okay. Okay. Just try to squeeze your answers. Make it crisp. Okay. Okay. Your answers are good, and you have अच्छा research किया आपने. You have also done a good research about this IOCL also. Good. Thank you, sir. Okay. See you, sir. Okay, sir. Next. तो ऐसे ही देखने के लिए
यस सर, मतलब बाहर के लोगों से इतना कांटेक्ट होता नहीं है ना जनरली, साइंटिस्ट लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा है सर, बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा हम लोगों को। अरे चल चल भाई, ठीक है, टॉप। आज तू खा लेना यार, जो तेरे को खाना है पार्टी दे दूंगा, ऐसा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई क्या? हाँ, आशीष मिश्रा। Good evening, sir. My name is Harsh Mishra. I belong from Etah Pradesh, Uttar Pradesh. I did my schooling from Kashgan, Uttar Pradesh. I did my BTech in chemical engineering from NIT Raipur, Chhattisgarh, where I did my summer training from the Gas Authority of India Limited, Pata, near Kanpur, where I did my project on the heat exchanger, where I did heat duty calculation and calculate the efficiency of heat exchanger. Along with my academics, I involved in extracurricular activities where I had privilege to work as a president of a chemical engineering association. I won the best bowler award 2 times in my college. My hobby is to playing cricket. Okay. You said about that heat duty calculation. Yes, sir. How you have done that? What type of heat exchanger was there? What type of Sir, there is a silent tube heat exchanger. Actually, sir, I did my internship in a high density polyethylene plant, where there is a heat exchanger to cool the CST reactors. Okay. So we have to calculate the efficiency of reactor overhead condenser to how much it cool the CST reactor. So how you have calculated? Sir, we have to take the temperature from the DCS panel. And yes. Then that exchanger is a cooling water exchanger or a yes, chilled sir, water sir. exchanger? Cooling water exchanger. Okay. Yes, sir. So, sir, flow rate of water is approximately 540 ton per hour. And 540 tons per hour. Yes, sir. First, we calculate the theoretical heating to the how theoretical, like ethylene is flow rate of ethylene is like 17 ton per hour. Okay. In the overhead condenser. First, we calculate the how much heat is required, pure theoretical. So the heat of polymerization is like 4180 megajoule per kg. Then we calculate the Q theoretical. Then after calculating Q theoretical, we have to measure the temperature of outlets of water. Like it approx 43 degrees Celsius, and inlet temperature is like 39 degrees Celsius. So there is a heat capacity of water 4.187. Then we multiply. Then after Q required, then we divide the Q theoretical, Q required upon Q theoretical. So there is a efficiency come of 72%. Is this the method for calculating the heat duty calculation of the effectiveness of heat exchanger? Yes, sir, I calculate as that. This is not calculating the effectiveness of a heat exchanger. You know, NTU method. No, it is efficiency, not effectiveness. How this is called efficiency? You're just calculating the how. That is not also theoretical also. That is, you are calculating how much heat is pickup. Pickup कितना है? Heat का pickup कितना है? It is basically how much heat is removed over a condenser. How much heat is? You are just calculating how much heat is picked up from this exchanger. That's it. So basically, what you are doing is heat duty calculation, heat efficiency, heat exchanger efficiency नहीं. When you are saying efficiency, na, it matters कि how much it can remove and how much it is removing. So it is overhead like polymerization reaction is occurring in CSTR reactors. So it is a very highly exothermic reactions. Yes. So we have to cool the CSTR reactors. Yes. So we have three type of method. One is reactor jacket, and second is a overhead condenser. So we have to calculate the how efficient the overhead condenser is to remove the heat from the CSTR reactors. So that there is no tragedy occur in CST reactor. Tragedy like what? Runaway reaction? Yes, sir. Yes, sir. How means how you can stop a runaway reaction?
Sir, if there is no efficiency, if there is no efficient work of a reactor jacket of overhead condenser, so there will be a blast in CST reactor because it is a highly exothermic reactions. That's why, sir. Basically, I'm not convinced about this efficiency of heat exchanger. If you have done something, is I'm not aware, but might be a different thing. Okay. Any subjects favorite subjects? Yes, sir. Heat transfer and mass transfer. Heat transfer and mass transfer. Okay. So, do you know about this adsorption? Yes. What is adsorption? Absorption, yeah, adsorption. Adsorption, AD. Say adsorption is a surface phenomena, sir. Then? So when we have to absorb something from like we have to clean the water, then we have to charcoal in the water. So when the solute particle which is present in the water, then we adsorb on the surface of a charcoal. तो कौन सा उसका एक प्रिंसिपल है उसमें किसमें वर्क करता है? Some diagram we draw. You know the name of diagram? Sir, I am not aware of that. Okay. Yeah. Do you know about the evaporators? Yes, sir. How many? What is do you mean by multiple feed evaporators? Sir, feed evaporator we used to for increase the economy of the process. How? Sir, in multiple feed evaporator that there is different type of feed like forward feed, yeah, backward feed, yeah, mixed feed. When we use the forward feed evaporator, then we have to feed a steam in the first reactor, and also feed a steam in the first reactor. When so we have to use the evaporator for concentrate the solution. When some solution is evaporated from it and vapor is formed. Suppose you have to concentrate a juice. Yes, sir. So what evaporator you will prefer, forward feed or backward feed? Juice is a heat sensitive material. Yes, sir. So what so will then we use to backward feed evaporator. Okay, why? Yes, sir, because because we feed a steam in the first reactor, so there is a high temperature, and there is a low temperature in the last evaporator. So we have to feed the juice in the last evaporator where there is a low pressure. Why we are doing that? So because this is a heat sensitive. So heat sensitive है तो क्या होगा? Sir, if we feed this in the first reactor, then this more evaporate. So we have to not get a good quality. Because basic क्या है, the concentration and temperature should go like that. ठीक है? Yes, sir. Not like that because of the heat sensitive material. ठीक है? Now tell me what is you have learned about this boiling curve. Boiling curve जानते हैं आप? Boiling temperature curve. हाँ, boiling temperature curve. ठीक है? उसमें आता है एक Landis force point आता है. Yes, sir. क्या होता है वो? Sir, it is the point where is the heat transfer flux is very minimum heat transfer flux. Like when we boil the water, so when we boil the water, so there is a formation of bubbles. But after the very high temperature, there is no contact of bubbles water from the surface, like from the surface of beaker. So there is a very less heat transfer flux. Why? So because there is no contact, so there is a low convection. Low convection, or the heat is transferred. The mode of heat transfer in that case will be? Sir, after that radiation is start. After the leaded first point, radiation is also start. But there is a boiling conduction mainly. There is a convection from the bottom of the part, but there is no convections from the surface of the beaker because there is no contact between the bubbles and the surface of beaker. Okay. Now, tell me about this. Do you know about the rotameter? Yes, sir, rotameter. Okay. What are the different forces acts on a rotameter? How you calculate?
What are the force balance you do in your rotameter? The rotameter is work on a variable area principles. So there is a buoyancy force upward, and gravity force downward, and drag force upward. So how you balance it? Which forces you balance? Which forces are on the left side? Which forces are on the right side? Okay. So buoyancy force is equal to drag force and gravity force. Drag force will be on this side, or drag force will be on the lower side? So upward side. Upward side, तो gravity force इधर रहेगा. Gravity is equal to buoyancy force plus drag buoyancy force plus drag force. Okay. ठीक है. Anything you want to know? Sir, I did my minor project on the wastewater heat treatment. Okay. Using a S1 plus. So I have to tell in the intro or not? नहीं, जरूरी नहीं है. मेन प्रोजेक्ट किसमें बोला है? Sir, heat exchanger. That's. हीट एक्सचेंजर वाला थोड़ा सा यार, थोड़ा मतलब शायद वैसा होगा. थोड़ा सा इसको थोड़ा और टेक्निकल बनाओ ना ऐसा. So as my guide suggests, this is a fancy. That's why I do. बहुत सिंपल लग रहा है कि मतलब एक हीट एक्सचेंजर है, उसमें तुमने कूलिंग वाटर का फ्लो देखा, इनलेट देखा, आउटलेट देखा, ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और तुमने ये देखा कि इसका कितना हीट ट्रांसफर होना चाहिए, तो तुमने एफिशिएंसी निकाल दी. भले तुमने किया नहीं हो, मगर थोड़ा सा इसको बोलो कि मतलब थोड़ा इसको मॉडिफाई करो कि इतना फ्लो जा रहा था, इतना हीट एक्सचेंज हो रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कैलकुलेट किया तो थोड़ा कम आ रहा था, तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा कूलिंग वाटर फ्लो बढ़ा सकते हैं या ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके थोड़ा बताओगे ना तो अच्छा लगेगा. ऐसा तो लग रहा है, ऐसा लग रहा था इसमें कि कहीं पे डेटा था और तुमने कैलकुलेट करके उनको बता दिया. Sir, I collect data from DCS panel. हाँ, डीसीएस पैनल से कलेक्ट करना डेटा कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, जस्ट आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टेक्निकल के ले जाओ कि मतलब लगे कि आपने उनको कुछ बताया. ठीक है, इट मे बी डन और इट मे बी नॉट डन, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर. ठीक है, बट यू हैव टोल्ड समथिंग कि अगर आप नहीं बता दे, जैसे 1+1 मैंने उनको 2 बता दिया, तो ठीक है, 2 था इसलिए 2 बता दिया मैंने. बस मैंने उनको बताया कि 1 के बीच में प्लस लगाना था, फिर 1 लगाना था, तब 2 आया. ऐसा थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लो. ठीक है, जरूरी So can we कोई tell check that करके. we collect the data from water outlet and water let, then we calculate the. हाँ, उनको ऐसा बताओ कि क्या है कि सिर्फ. Then we calculate the LMTD extra. हाँ, ऐसा करो ना, ऐसा बताओ. ठीक है, उसको बोलो कि टेम्परेचर इंडिकेशन वाटर का नहीं था. ठीक है, फ्लो इंडिकेशन नहीं था, तो हम क्या है फील्ड वाले के साथ गए, उसने क्या है एक फ्लो मीटर, अपना अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर लगाया था जिसमें उसने कूलिंग वाटर फ्लो बताया. ठीक है, फिर हम वहां पे टेम्परेचर गन ले गए थे, तो हमने टेम्परेचर मेजर किया, इनलेट आउटलेट का कितना आ रहा है. ठीक है, फिर हमने उसके बाद उसकी हीट ड्यूटी कैलकुलेट की, फिर उसके बाद उसका एलएमटीडी कैलकुलेट किया. तो ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि कुछ किया है. डीसीएस पैनल से डेटा ले लिया, नहीं, वो नहीं था. कूलिंग वाटर का मोस्टली जगह, कई जगह नहीं रहता है डेटा. 90% जगह कूलिंग वाटर का डेटा कोई नहीं रखता है. वो बोल रहा है कि हम फील्ड वाले के साथ गए थे, उसने अल्ट्रासोनिक मीटर लगाया था, उसमें से फ्लो मेजर किया था, टेम्परेचर गन से हमने टेम्परेचर देखा था, फिर हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, फिर हमने एलएमटीडी निकाला, फिर कैलकुलेट किया. ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बताना. ओके, ठीक है, बाकी ठीक है, इंट्रो सही है और ये भी सही है, तुम्हारा टेक्निकल भी सही है ना. ओके, हीट एक्सचेंजर में तुमने एम्फेसाइज किया इसलिए पूछा मैंने, बाकी ठीक. ओके, ठीक, ओके, थैंक यू सर. ओके. नेक्स्ट कौन है? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग है, कल भी दिया था तुमने? जी सर. अच्छा, नहीं सर. ओके.
Good evening, sir. Good Hello. evening. Good evening. My name is Recording Aniket in Prajapati. progress. I belong to Bulandshahr, Uttar Pradesh. I have done my graduation from National Institute of Technology, Jaipur. And in my third year, I have done an internship in in the Royal Mathura Refinery. I have after that the college I have joined Ultratech Cement Limited and worked there for 11 months. After which I joined IIT Roorkee and in MTech at Chemical Engineering. And that's all, sir. What was your project in IIT and MTech? Whether you are pursuing MTech or you have completed MTech? Currently, sir, I'm in first semester of MTech. I have work experience in Ultratech Cement. Okay. Okay. In which department you were working in Ultratech Cement? So process department. Process department. Sir. Process. So whether they were okay. So whether they were producing that clinker also or cement only? So it was grounding units, so clinker and cement both. Okay. So do you know any other use of clinker? It is used as cement also, where it is used as other. No, sir. Any other use? I am not aware. How do they produce clinker? So it's basically produced by the calcination process, and the various other reactions that happens in the kiln. That start from the basic raw material that we use the calcium carbonate and red mud and silica for the flux required, which is iron oxide and silica oxide. These oxides will partially grinded into the raw mill. Raw mill are different kind of raw mills. Ball mill BRM. We use BRM, and after that they reaches the preheater column. In preheater column, calcination reaction happens at the 900 degrees centigrade, where calcium carbonate break down to calcium oxide and the carbon dioxide. And this calcium oxide further react with the other oxides of silica and iron in the kiln. Kiln has different. So there's a specific name of the kiln. Do you know the name? Kiln, sir? There's a specific name for this kiln. Yes. No, sir. Specific. There's a special type of kiln used. There is some. Okay. It's basically called rotating. Okay. So any other subjects you have favorite subjects? So heat transfer and mass transfer. Mass transfer. Okay. Any 5 unit operations you tell? Distillation, absorption, extraction, and adsorption. That's all. Okay. What is extraction basically? Any examples for extraction? So like we have a liquid mixture or liquid kind of mixture where the relative volatility is close to 1, but that we cannot separate from using distillation. We use the simple process of the difference between their solubility. And extraction, we use another component which is called the carrier, which is called the solvent. The solvent take away the solute with itself, and it is easier to it is easier to separate it from the solute than from the carrier. Sir, I have also done. Sir, I have also done a project in BTech project in my BTech also, which is for the reactive extraction of vanillic acid, which employ the same principle of the reactive extraction. Okay. So that selectivity terms comes in the extraction. What is selectivity? It's basically the concentration or the fraction of the solute in the raffinate phase to the fraction of the solute in the extraction phase. There's an equilateral triangle is used for showing the concentration of this solutes and the solvents in this in the mixture. So why this equilateral triangle is used? So because we have 3 different components, and at the each stage or each phase, these 3 different components will be playing a role. Like based on this triangle, we can create the binodal curve, the raffinate phase, and exchange phase tie lines, and the composition. Why it is equilateral only? Why it not be a right angle or this?
that some other angle also there, na? What do you call it? Isosceles. Isosceles, yes. Why it is equilateral only? I think, sir, we have 3 different components and we are dividing them equally. We had for our analysis, we are dividing it equally because of this is. Because in isosceles triangle, you can also divide it equally, no? So there are only 2 equal sides, or so. Actually, sir, I'm not completely aware. Okay, because I'll tell you, because in equilateral triangle, at any point, any point you choose, the distance between the two will be equal to the distance between the one. At any point, no? That is that's why it is used. Means if distance is x, y, and z from any corner, then either x plus y is equal to z, or y plus z is equal to x, or x plus z is equal to y. So there is a mass balance. That's why we use equilateral triangle. Okay. Okay. How you decide on the number of stages in extraction column? So we can do the individual balances like on different stages, and till the concentration or the fraction required reaches. Like we can do balance on first stage, and then second, and then second stage, and so on. Like we then individual stages we do. Yes. Okay. Now tell me, क्या बोलते हैं distillation column, absorption column में, ठीक है? If I increase the pressure, ठीक है? Whether absorption will increase or not? So absorption basically depend on the solubility of the component. If the pressure increase, I think solubility should increase, so the absorption will increase. If I increase the temperature also, what will happen? So temperature increasing will, I think, decrease the solubility, because increasing the temperature, gas will be more volatile or more. So I think volatile should not be used for gases. Okay. Volatile. Okay. Solubility will reduce as you increase the temperature. Okay. You might have seen that dew, as winter has started, dew starts to form in the outside bike seat पे dew form होता है. क्यों होता है form? So dew is basically, sir, when the temperature reaches the dew point, the final. Actually, sir, I'm not completely explained about it. Okay, ठीक, कोई नहीं. Or do you know about the cooling towers? What are the cooling towers? Yes. You have worked in Ultratech, na? There must be a cooling tower also. No, sir, they do not have cooling tower. They have thermal power plant and the waste heat recovery system. They don't have power plant? They have power plant, thermal power plant and waste heat recovery system, but they do not use cooling tower. They use simple AC chilling systems. If they have, I think because they must be using cooling tower also. So they are only few 13 megawatt and 13 megawatt type of thermal power plant. So they don't use cooling towers. So what do you know about the cooling towers? It's basically the contact type heat exchanger, where the contact between the fresh air and the water take place. The water fall from with the help of gravity, and they can be based on the contact. They can be different type, like post type, and induced type. So the main driving force is the difference between the wet bulb temperature of air and the inlet temperature of the water. Okay. Then why you left Ultratech? Sir? Why you left Ultratech? Sir, because I want to explore more the career opportunities. So I was thinking. I was thinking to align more in the energy field. Like if I will be working in a PSU, I can work toward the nation also. So I was thinking to like a company like more energy. ठीक है, चलो पूछना तुमको. So like, what are the questions that can be asked from my experience in Ultratech? एक्सपीरियंस अल्ट्राटेक का मैंने पूछा था, ठीक है, तो तुमने तो सही बताया, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ उसमें.
Like, sir, if I can tell, like, because you have worked for 11 months, not for 2-3 years, so they just want to know the basic process. बेसिक प्रोसेस तो आपने अच्छे से बताया है, ठीक है, इसका कोई है नहीं. रॉ मटेरियल भी आप जानते हो, रॉ मटेरियल कहाँ आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, वो पता है, ठीक है. दूसरा क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज के लिए है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द होल वर्ल्ड, ठीक है. सो इट इज सच अ बूमिंग इंडस्ट्री. तो अब इसको छोड़ के हम इधर आए, तो थोड़ा सा एक आंसर जो है ना, इसका ऐसा बोल देना कि दैट सीमेंट इंडस्ट्री इज नॉट फॉर्म अ कोर केमिकल फील्ड, ठीक है. इसको ऐसा बोल देना कि पर्टिकुलर जो सीमेंट प्लांट दे आर वर्किंग, दे आर बेसिकली मोर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड दिस civil engineers are there. Chemical engineers are less only. This is not a core field for a chemical engineer. So I want to work in a core field. That's why I have left that Ultratech and I joined this MTech for MTech. And why you want to leave MTech? Because ultimately I was preparing. So ultimately I was preparing, and that job was not helping me to enhance my knowledge with respect to the chemical engineering perspective. So for the time being, I have joined the MTech so that I can study for the PSU also and my knowledge also increase. ऐसे बता दूँ, ठीक है? So will it be good to like include my project like that in that I have been in Ultratech, like heat balance and dust collection efficiency? Heat balance नहीं, क्या है उसमें फंस जाओगे, क्या है? अल्ट्राटेक में 11 महीने काम किया है, बेसिक प्रोसेस में है, बेसिक प्रोसेस जानते हैं, जो डोंट गो इनटू दैट हीट बैलेंस एंड ऑल, ठीक है. Because if some guy worked in that cement industry ना, अगर कोई वहाँ बैठा होगा, so he'll catch you. ठीक है. तो you just say कि अल्ट्राटेक में काम किया, जिस बेसिक प्रोसेस बोल के आपको आगे बढ़ जाना. Okay sir. Good. अच्छा है. Thank you sir. Okay. Recording stopped. Okay. Hello sir, am I visible and audible? Please, एक मिनट. हाँ, बताइए. Good evening, sir. My name is Simran Hirekar. I am from Nagpur, Maharashtra. I did my chemical engineering at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. And then I did my industrial training at Navin Fluorine International Limited, where I got a chance to gain hands-on experience on industry and also helped me to apply my academic knowledge. I was also the social media head at AICHE, CHES, SVNIT at college. And apart from this, in my leisure time, I like to read books and do quizzing. And I want to join IOCL because it is the backbone of energy nation, nation. So I want to explore my opportunities here and grow both professionally and personally. ठीक है. You said you have worked in Navin. You have got training was in Navin Fluorine, and you said you have implemented your academic knowledge. What you have implemented there? Sir, actually, I had a chance to work in the technical services department. So we were not sent to the the production house much more times. So what they did for us is they gave us different types of word problems to do mass and energy balances on different type of equipments that they had there. So this helped me to gain knowledge about mass transfer and any particular equipment you have done mass balances? Sir, we were given any particular unit operation you have done mass? We were given to do mass balance on neutralizing tank and also on the HCl absorber. Both of them were given to us to do a bit of calculation. They also helped us to learn about some process simulation softwares along with this.
HCl absorber, how they are doing HCl absorption? Sir, HCl absorption, sir, actually there was a plant called Argo plant which produces R32 refrigerant. So in that there is an HCl absorber which removes all the impurities in this and separates HCl and R32. So R32 with other traces of other small refrigerants. So this was one of the thing that was done in the HCl absorber. So what our mentor did was he gave us some calculations to do, and he asked us to just balance it and just balance it. Acha, you told about R32 refrigerant. Yeah. You have AC in your house? Yes. Which refrigerant is there in your house? In AC? Sir, I'm not aware of that refrigerant, but this. But tell me what does a good refrigerant should? What properties should a good refrigerant have? Sir, a good refrigerant should have a property that it shouldn't harm the environment, like like what we were working on. We were told that that the R32 refrigerant it has a very less global warming potential and zero ozone layer depletion potential. So that is the reason they have started making this or producing this refrigerant rather than our. So flammability class is also important here. That much I know. That is safety. Okay. Just learn about the latent heat. What about how much latent heat it should have? What is the thermal stability it should have? What is the toxicity it should have? They may ask you. Okay. Okay. What are your other favorite subjects you like? Sir, mass transfer and heat transfer. Okay. Heat transfer में बताइए what are the how the earth is getting heat from sun? What is the mode of transfer? The mode is due to the electromagnetic waves, that is radiation. That is the reason we are getting the radiation of sun from to us, like to the earth. So why this is like that? कि winter में सर्दी पड़ता है and that in summers heat is there. Sir, because our earth is rotating, so that is the reason. I guess, and the temperature difference, because our sun, we also get a little bit away from the sun. Earth is rotating 24 hours. So how does it relate? It is related to day and night. Like revolving. Revolving around? Earth is revolving around the sun, so Earth is farther from, in winters, Earth is farther from the sun. So it is an oval shape, basically. So tell me, why this our North Pole and South Pole are cold, but equators are hot? Sir, in equators, sir, actually our Earth is tilted, like the axis is tilted. So when if the earth was straight, like in the same one axis, then the sun rays would be distributed equally. But as it is, as the axis is changed or tilted, the south pole or the north pole doesn't get that much heat as that of the equator. Okay. Do you know about the reaction engineering also? Sir, I have little bit idea, but I need to revise about it. Okay. Okay. Do you know about what is NTU method for calculating the effectiveness of a heat exchanger? Yes, sir. NTU method is the we calculate the effectiveness of the heat exchanger. Sir, heat exchanger or distillation column? No, effectiveness of a heat exchanger.
Okay, sorry. Heat exchanger, the effectiveness of heat exchanger is the actual heat that can be given to the. It is the ratio of actual heat to the maximum heat possible in the heat exchanger. So we use NTU method, that is the ratio of that is UA upon C minimum, that is the ratio of heat transfer upon the capacity ratio, or the heat duty upon the capacity ratio. Okay. Do you know about what is Argun's equation? You know? Argun's equation? No, sir. How you calculate a pressure drop in bed? Pressure drop in bed. Yeah. Sir, Argun's equation is sir, yes, I know about it. Like, what do I need to? I mean, so how it is related, how the length of the bed is related, how the viscosity, how the porosity of the bed is related to the pressure drop. If I increase the porosity of the bed, how the pressure drop will change? Sir, if there is increase in porosity of the bed, the pressure drop will decrease, as it is inversely proportional. There are two types of equation. One is Kozny-Karman, and sir, I don't remember the other equation. Okay. So ठीक है, आप बताइए, आपको कुछ पूछना है? Sir, actually, I did my intern. I have two internships. One internship is one is a research internship. So should I include that also, or should I just keep research it? internship in किधर किया है? A research internship in Lakshmi Narayan Institute of Technology on removal of wastewater, removal of ciprofloxacin from advanced oxidation processes, like through advanced oxidation process. LNCT Bhopal. So no, LITU Nagpur. LIT Nagpur. Okay. LIT Nagpur. नहीं, Navin Fluorine is good. अच्छा है. It is a good industry also. ठीक है. Just Sir, actually, Navin Fluorine, we were not given so much work as that I could explain them. Like we were just given desk job. हाँ, डेस्क जॉब तो ठीक है, उसको ऐसा एलिब्रेट करना है. फर्स्ट तो थिंग है कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा काम करना है. ठीक है. वो इंट्रोडक्शन इज टू शॉर्ट. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लिख के इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा सा इंप्रूव करें. 7 to 8 लाइंस का इंट्रोडक्शन बनाए. ठीक है. दूसरा क्या है, जो आपको डेस्क जॉब दिया है, ठीक है, तो इसको आप डेस्क जॉब ना बोले. वी वर इन द टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट. ठीक है. एंड उसका कोई भी एक बता दीजिए कि some distillation column or something like that was there. ठीक है. And we were asked to do a mass balance. ठीक है. और उसका एक mass balance आप करके देख लें. ठीक है. If somebody asked how you have done, तो step by step you can tell him. ठीक है. So तभी फ्लोरिन से निकल जाएंगे. दूसरा ये क्या है कि this for the subjects ना, you told about this heat transfer and mass transfer. You must also include fluid dynamics also. At least if you are not comfortable with fluid dynamics, at least add pumps in that. ठीक है. I have not asked about your pump. ठीक है. So add pumps also. Its characteristic curve also. Okay. How the pump works, its characteristic curves also. You must include. Sir, I'm also aware about it. About that, sir, you are asking about that head power and. Yes, you are aware. It is good. Yeah. I have just not asked you, so I am just saying like that. ठीक है. कि आप cover कर लेना. ठीक. बाकी तो ठीक है, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन संभालना है. ओके ओके ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ओके. हो गया. और कोई है क्या?
ओके ओके ठीक है।